जय जगन्नाथ। वेलकम टू स्पिरिचुअल केमिस्ट्री। आज कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास को समस्त को स्वागत। आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स जॉइन द क्लास। चलो क्लास करिए। वेलकम टू स्पिरिचुअल केमिस्ट्री। आज कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास को समस्त को स्वागत। स्पिरिचुअल केमिस्ट्री ओके। अब बहुत कम दिन है माने उठी पार्छ मॉर्निंग रे। धर जो दिन राति रे बहुत दीटा गोटे दीटा बेले सोची से दिन मॉर्निंग रे सेते बेले गोटे दीटा हो गले मॉर्निंग रे उठी होनी, तो जद्वारा क्लास भी करी होनी। सो सॉरी फॉर दिस। आरंभ करिवा। कार्बोक्सिलिक एसिड हम जब देखिवा नोमेनक्लेचर। मिथानोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इथानोइक एसिड माने एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड माने प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड एन ब्यूटेरिक एसिड, पेंटानोइक एसिड एन वेलेरिक एसिड, हेक्सानोइक एसिड एन कैप्रोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, हेक्सेन डायोइक एसिड, सक्सिनिक एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड, मालोनिक एसिड, 3 कार्बोक्सी पेंटेन। तापर फर्दर these are the IUPAC names accordingly. So मन रख ऑक्सैलिक एसिड माने 2टा कार्बन थिबो, आउ सक्सिनिक एसिड माने केतरा थिबो ना COH 2टा थिबो, CH2 होल 4, टोटल 6टा कार्बन थिबो 2टा, बट इट इज ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन 3टा कार्बन थिबो ताले एडा को जे मालोनिक एसिड। So you have to remember these 3 terms. Next, further this is benzoic acid, ortho-hydroxybenzoic acid or salicylic acid, 2-amino benzoic acid or anthranilinic acid, then benzene 1,2-dioic acid, benzene 1,3-dioic acid. This is benzene 1,4-dioic acid or terephthalic acid. Since the other isophthalic acid and this one is phthalic acid. Further, these are the different compounds. Again, isomerism in carboxylic acid is shown by following isomerism. First one is chain isomerism. Chain isomerism रे कौन होगा ना different COH is attached at different functional groups, sorry different carbon chains. तो ये 3टा कार्बन रहा बेले ये 2टा 2 नंबर रे अटैच है, एटा 3 नंबर रे अटैच है COH। देन हेक्सानोइक एसिड, 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, 2 इथाइल ब्यूटानोइक एसिड ए भले चलची। तापरे आसला फंक्शनल आइसोमेरिज्म। कार्बोक्सिलिक एसिड रो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होची ester. So this is an ester, this is another ester of propanoic acid. Next, position isomerism. In position isomerism, main group remains same, but the position of the functional group remains different. Functional group ro position da
चेंज हो जाता है। देन आसला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन को आम ऑक्सीडेशन कले सॉरी प्रिपरेशन फ्रॉम अल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीडेशन कले ये कार्बोक्सिलिक एसिड आसो। अब अल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कले आसो। प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड दबो, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन दबो। हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल सियानाइड को हाइड्रोलिसिस कले वी विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन ईस्टर अपॉन हाइड्रोलिसिस विल गिव राइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। Acid chloride upon hydrolysis will give rise to carboxylic acid plus HCl as byproduct. Acid amine upon hydrolysis will give rise to carboxylic acid plus ammonia. Acid anhydride upon hydrolysis again give rise to carboxylic acid. Further trichloroalkane but trihaloalkane upon treatment with NaOH will produce trihydroxyalkane, which on rearrangement will produce carboxylic acid. Grignard's reagent when react with carbon dioxide it gives rise to an addition product which upon hydrolysis produces carboxylic acid and magnesium hydroxyl halide. Further benzoic acid can be prepared from toluene when it is oxidized in presence of KMnO4 followed by KOH, aqueous KOH. In this way here it will form the intermediate potassium benzoate. Next it will give rise to the benzoic acid. Similar way is for benzoic acid and phthalic acid. Next, physical properties. All the three members are colorless liquids having pungent smell, and from 4th to 66th all are liquid, oily liquids having unpleasant odor. Solubility, these are highly soluble in water due to formation of hydrogen bond. And in case of isomeric alcohol, when the size of alkyl group increases, the solubility decreases. Solubility संसारे कमी जीव alkyl group बढ़ले due to less surface area. Melting point, more the number of carbon atoms, more will be the melting point. But even number carboxylic acids have more melting point than odd numbered carboxylic acids. Further, boiling point is higher as compared to alcohol and aldehydes due to their dimeric structure. But when volcanicity increases, that is when branching increases, the boiling point also increases. Then acidic strength. Acidic strength, if we compare here, acidic strength, carboxylic acid is acidic due to release of H plus ion, and the carboxylate ion. Carboxylate ion is highly stabilized by means of resonance. In between alcohol and carboxylic acid is more stable as the carboxylate ion is more stabilized by means of resonance, and more the plus effect, less will be the acidic strength. Then more the minus effect, more will be the acidic strength. Further, aliphatic acid are more acidic in between benzoic acid and aliphatic acid. If we compare between benzoic acid and aliphatic acid are more acidic. Next, comparison of acidic strength, because in case of benzoic acid, due to resonance, there is electron density increases on COH group. Next, comparison of acidic strength among substituted benzoic acid. If there is electron donating group, remember, if there is electron donating group present at ortho and para position, if there is electron donating group present at ortho and para position, the acidic strength decreases comparatively. And further, if they are present at ortho, electron withdrawing group is present, electron withdrawing group जदि थिबो तारा acidic strength बढ़ी जिवो.
डोनेटिंग थिले कमिबो आउ विथड्रॉइंग ग्रुप थिले बढ़िबो ओके next acidic exchange between carboxylic acid and phenol. Generally carboxylic acid is more acidic due to canonical form. We had already discussed in phenol part also. But phenoxide ions, all the phenoxide structures are not similar. Then chemical properties, reaction with metal. Carboxylic acid when react with metal, it forms sodium carboxylate plus H2 gas. And again when it react with NaOH, it give rise to sodium carboxylate plus water or potassium carboxylate plus water accordingly. When it react with Na2CO3 or NaCO3, again it give rise to corresponding salt, CO2 and water. So these were involved in the chemical part which here explains the COH group. So it was all about the reaction due to COH group, that is acidic part. Next, second part reaction is reaction due to OH part of COH group. OH part of COH group. And remember here OH part means it does not denote the basic property. यार अर्थ इटा बेसिक प्रॉपर्टी नुह अल्कोहल रो एसिडिक बेसिक दीटा प्रॉपर्टी रही है किंतु दिस इज जनरली एसिडिक ओनली बट हियर OH पार्ट रिएक्ट करूची फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ amide by reaction with ammonia. So OH ammonia से तो react करियो, so quite interesting reaction with ammonia and its derivative. Ammonia and its derivative. So carboxylic acid when reacts with ammonia, carboxylic acid when reacts with ammonia or ammonia its derivative, एमोनिया किंबा तार डेरिवेटिव सहित रिएक्ट कले ये कौन दबो गिव राइज टू corresponding acid amide. एटा हमें कौन पाइबा acid amide पाइबा. So what is the reaction here? The reaction is carboxylic acid R bond COOH plus ammonia give rise to RCOONS4 and this is your ammonium salt, ammonium carboxylate. Again it will give rise to RCOOH plus
it will give rise to RCONH2 plus H2O. ONS4 टा further decompose हो RCONH2 plus H2O. Okay, so further if we write here formic acid, R जगह हम जदि formic acid नबा SCOH plus when react with ammonia, it will give rise to SCONH2 SCOONS4, that is ammonium formate, which will again produce SCONH2 formamide plus H2. Remember, formamide is highly unstable at room temperature, so it will again react to produce the product accordingly. So formic acid, ammonium formate, and this is formamide. Is it clear? ठीक है. Then what happens to ethanoic acid or acetic acid? Acetic acid रे कौन हबो? एसिटिक एसिड पाई कौन आसीबो प्रोडक्ट सेम रहबो CH3COONS4 ammonium acetate, which upon heating decomposes into acetamide plus H2O. So this is acetic acid. This is ammonium acetate. And this is acetamide. Acetic acid na acetamide. Further, when we react with C3H7COH, with ammonia when reacts with these things, we will get C3H7COONS4, which upon decomposition produces C3H7CONH2 plus H2O. This is propanoic acid. Where it gives rise to ammonium propanoate or ammonium propionate. And this is propanamide. When we react benzoic acid, with ammonia, we get ammonium benzoate, which upon heating decomposes into C double bond O NH2 plus H2O. So this is benzoic acid. And this is ammonium benzoate. And this is benzamide.
इज इट क्लियर? ठीक अच्छे। नेक्स्ट सेकेंड इज esterification বা reaction with alcohol. Very important এটা, reaction with alcohol or esterification. We can write here carboxylic acids react with alcohol to give rise to corresponding ester. To give rise to corresponding ester. So the reaction is R bond COOH plus HOR dash give rise to, and remember it is jitole water displace habo OH from carboxylic acid and hydrogen from alcohol will be displaced, so you will get RCOOR dash plus water. Next, if we react formic acid SCOOH formic acid with methanol, starting is methanol, then what you will get? SCOOCH3, that is methyl formate plus water. यार नेम केमती करवा? सो सी हियर, दिस इज गोटे ओ पाखे मिथाइल अच्छी एंड SCO इज another methyl, so name will be methyl formate or methoxymethanate. Methyl formate or methoxymethanate. Remember, this is highly unstable at room temperature. Methoxymethanate is highly unstable at room temperature. Methoxymethanate. Next, if we take another example, that is acetic acid. Acetic acid plus methanol. What will be the reaction? Then propanoic acid plus methanol, what will be the reaction? Acetic acid plus ethanol, what will be the reaction? The rate of reaction of carboxylic acid will be increased if the branching increases. Then this is benzoic acid what happens when benzoic acid reacts with methanol? This is again benzoic acid when reacts with phenol.
So this is benzoic acid, this is methanol, and this is phenol, this is benzoic acid, so again it will give rise to products, that is here it is CH3 COOCH3. So this is methoxyethanoate or methanoate. So you have to write down the answer in the next class. यार आंसर में नेक्स्ट क्लास डिस्कस करिवा, बट फॉर टुडे ट्राई टू राइट डाउन द आंसर. आज एटा होमवर्क रहला समस्त पाई. नेक्स्ट बिट 3 इज फॉर्मेशन. बिट 3 इज रिएक्शन विथ PCl3 और PCl5. Carboxylic acid reacts with PCl3 or PCl5 or PCl5 or SOCl to thionyl chloride to form acid halide और acid chloride. तो PCl3 किंबा PCl5 किंबा thionyl chloride से तो रिएक्ट कले इट विल गिव राइज टू acid chloride. एटा हमें कौन पाइबा? So what is the reaction here? That RCOOH plus PCl3 give rise to RCOCl जिन the alcohol rich Cl plus H3PO3 plus HCl. Again when it react with RCOH, again when react with sorry HCl तो बाहरी होनी एटा alcohol रो मुख देली H3PO3 ही रहिबो फॉस्फोरिक एसिड ही हबो. PCl5 से तो रिएक्ट करले कोन आसीबो RCOCl अल्कोहल रे सेंदी थिला RCOCl प्लस POCl3 राइट प्लस HCl आसीबो बाय प्रोडक्ट नो HCl बाय प्रोडक्ट होबो. सो फर्दर या को बैलेंस करले 3 दिस इज अगेन 3 बाकी सब ठीक अच्छे. ओके सो RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड को जो आम SOCl2 सहित ट्रीटमेंट करवा वी विल गेट R बॉन्ड COCl प्लस SO2 प्लस HCl. सो दीज आर द एसिड क्लोराइड्स. R जगह जब हमें H नबा it will give rise to SCOH. R जगह H नले SCOH plus PCl3 give rise to further एटा SCOH plus PCl5 give rise to CH3COH plus thionyl chloride, that is SOCl2 give rise to CH3COH plus PCl3 give rise to PCl5 give rise to, let it be CH3COH. या को भी चेंज कर दियो फर्दर या को भी CH3COH, then let it be C2H5.
change it, and this is further benzoic acid, plus PCl5 give rest. कौन आसो प्रोडक्ट जदि हम देखिबा फास्ट रिएक्शन CH3COOH कले एटा कौन आसो CH3COCl acid chloride by acid chloride, name of the compound is acetyl chloride, plus PO H3PO3 plus H3PO3 plus H3PO3. So then this is 3, this is again 3. So further when we react with PCl5 we get CH3COCl acetyl chloride plus HCl plus POCl3. PCl5 थिले तो नेले एगुडा आसे बाय प्रोडक्ट. So this is acetyl chloride, this is also acetyl chloride, and the remainings are homework for you. बाकी सब उड़ा homework. So ये वाला reaction with PCl3 और PCl5. Next 4 number reaction आसची. 4th number reaction is dehydration of carboxylic acid in presence of dehydrating agent like P2O5. So it is further what is the reaction that carboxylic acid upon dehydration in presence of P2O5 dehydration in presence of P2O5 phosphorus pentoxide produces corresponding acid anhydride. So R bond COOH, here is again R bond COOH, P2O5 ର प्रेजेंस रे जेतोला में हिट करिवा एटे कोन हबो ना वाटर हे की बाहर जीवो HOH वाटर हे की बाहर जीवो and ultimately we will get R bond CO bond COR. Remember एठी हमें दिर जाको सेम अल्कोहल सेम कार्बोक्सिलिक एसिड नवा डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड नेले हमको फर्दर एठी जो एस्टर पाइबा हमको सॉरी एनहाइड्रेट पाइबा असुविधा हे जो. So this is your H2O. So this is acid anhydride. Name of the compound will be acid anhydride. ताले प्रथम हम नबा CH3COH
again in presence of P2O5 upon heating will produce CH3CO O plus H2O. This is known as your acid anhydride. Name of the compound is acetic anhydride. Acetic acid thila, so this is acetic anhydride. Again C2H5 bond COOH, and there is again C2H5 bond COOH upon heating in presence of P2O5, or we can also take vanadium pentoxide. We can also take vanadium pentoxide. This is propanoic acid, this is also propanoic acid. P2O5 heat, but vanadium oxide nele pentoxide nele product कम आसिबो comparatively. And this is direct benzoic acid. So it is कौन आसिबो product? This is C2H5 bond CO, again C2H5 bond COO. This is 3 member, so the 3 member रहला माने propanoic acid, and this one is propanoic anhydride. Propanoic anhydride, ठीक अछि. Product name आसिबो propanoic anhydride. So this is propanoic anhydride. Again it is C3H7 bond CO bond O plus H2O. This is butanoic anhydride. And this is again benzoic acid is there. So this is benzoic anhydride. Next class रे हम देखिबा another type of reaction, that is reaction due to CO part of COH group. CO part of COH group ro reaction नले से part हम discuss कर देबा. That is only one reaction will be discussed in reaction due to COH. So it B number reaction थिला. Next C number reaction. So reaction due to CO part of COH group. So under this only one reaction is there, that is reduction. Reduction रो भी variety of reducing agent रही, like HI अच्छी, red phosphorus गोटे reagent अच्छी. So carboxylic acid when reduced in presence of reducing agents like
LiAlH4 LiAlH4 it produces alcohol. LiAlH4 दबा it produces alcohol when it is reduced in presence of Hi and red phosphorus we get alkane. मन रख रिएजेंट अलग हेले प्रोडक्ट भी अलग हो किंतु बोथ आर रिड्यूसिंग रिडक्शन ठीक है. सो R बॉन्ड CO बॉन्ड OH प्लस फर्दर ये कौन यूज करवा ना हाइड्रोलिसिस करवा. हाँ आउरी गोटे रिडक्शन भी रही थिला. नेक्स्ट इज निकेल कैटलिस्ट प्रेजेंस रे कले वी विल गेट RCOH. so it H add है जो OH है जो पर aldehyde आसियो. when the reducing agent is nickel S2 we get aldehyde. so गोटे रिएक्शन रिडक्शन किंतु रिएजेंट अलग हेले प्रोडक्ट भी अलग हो ठीक है. एंड फास्ट आम कौन देखा RCOOH को जो आम प्लस S2 LiAlH4 जो यूज करवा लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट यूज कले वी विल गेट कौन आसो प्रोडक्ट ना R बॉन्ड C H2OH. so ये अल्कोहल आसो मन रख प्राइमरी अल्कोहल जो आम LiAlH4 फर्दर RCOH को जो आम रिड्यूस करवा इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट और पैलेडियम और प्लैटिनम वी विल गेट R बॉन्ड. सो H2 जो थी निकेल कैटलिस्ट जो डबल बॉन्ड थी सेठी सी ये करियो. सो अल्टीमेटली R बॉन्ड CO OH पुणी ताको थरे रिडक्शन कले H2 निकेल देगी it will give rise to alcohol again. डबल बॉन्ड जिते समय जाए रहिबा ये सेते समय जाए रिडक्शन करियो. सिमिलरली RCOH को दला में HI रो प्रेजेंस रे HI रेड फास्फोरस दे दवा we will get RCH3 R bond CH3 plus H2O. aldehyde intermediate no aldehyde भी ଗୋଟେ product अशोक. हेलो गुड मॉर्निंग. एडा कौन आसो रेड फास्फोरस देले वैलेंस कोले एडा कौन हबा फर्दर प्लस I2 3I2 आसो I2 आसो बाय प्रोडक्ट हिसाब रे बैलेंस कोले 6HI नेला 6HI नेले 3I2 हाइड्रोजन 6टा ले एठी RCH3 3टा हाइड्रोजन यूटिलाइज हो गला आ बळका रहला 4टा 2टा 6टा 2टा ऑक्सीजन. अच्छा सत्यवान गुड मॉर्निंग. एंड के बैलेंस कर पारे हो कैन डू बैलेंस दिस रिएक्शन. एंड बैलेंस टा मन पड़ने मोर वे
बुक रे तो देनी बे कहूँ गोटे मिनिट बैलेंस टा मोर मन पड़नी आपको बैलेंस करा बहुत समय पड़ेगा +2H2O +3I2 बस just this one okay it is balanced right ना कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखा जाइछि अच्छा एटा आल्डिहाइड हबो राइट एटा आल्डिहाइड हबो कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख देछि थैंक यू सत्यवान थैंक यू फॉर दिस एटा आल्डिहाइड हबो राइट सो से अनुसार हम जो देखिबा फर्दर एठी दिस वन इज ऑल दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड and this is alkane मन रख रिएजेंट चेंज हेले प्रोडक्ट अलग आसीबो HI रेड फास्फोरस हेले अल्केन दबो H2 निकल देले प्रथम आल्डिहाइड आल्डिहाइड फर्दर अल्कोहल कारण एठी यार काम होला ऐड करी जीवो गोटे LiLS4 डायरेक्ट स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हेतारो डायरेक्ट अल्कोहल दे दबो ठीक अछि तार अर्थ हम जदी H2 निकल कम कंसंट्रेशन नबा हमें आल्डिहाइड पाई परिबा ताले एठी फर्दर if we take about CH3COH को जेतोला में H2 in presence of LiLS4 use करिवा what we will get then acetic acid को H2 रो प्रेजेंस रे in presence of nickel catalyst करिवा कोन पासिबा प्रोडक्ट प्रोपानिक एसिड को HI रो प्रेजेंस रे रिड्यूस करिवा यूजिंग रेड फास्फोरस व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ब्यूटानिक एसिड को when we react with again when we reduce in presence of LiLS4 what is the product then pentanoic acid upon reduction with red phosphorus what is the product benzoic acid acetaldehyde ethanol very good ashok acetaldehyde और ethanol आसियो फास्ट आंसर नो benzoic acid upon reaction with nickel catalyst will produce this products okay so last one is again upon reaction with 6HI in presence of red phosphorus will give rise to which product so these are homeworks for you oda homework rohila next class रे हम देखिबा थर्ड टाइप रो रिएक्शन दैट इज COH ग्रुप जोगो जोटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड रो COH ग्रुप जोगो गोटे दुईटा टाइप और तीनटा क्लास लागिबो मे बी और तीनटा क्लास रे सर जीवो सो आज गला वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और 2 दिन ही मो क्लास नहीं परिबा आज काली पहर दिन
नहीं कि आपको कवर कर दवा। So these are the questions. First अच्छी तुम्हारा propanoic acid upon reaction with HI will produce then butanoic acid. So these are the questions involved here. Okay, thank you for joining the class. These are the questions which are given as homework. Thank you Ashok, thank you Satyavan for joining today's class. Thank you all of you.